287, which if it is not with you, it may be placed. 10287. 10287 CMA, because I will start with that, my lord. 10400 ہے 10287. 287. It was filed on 4th October 2025. یہ تو آپ کی ادھر ایسی ہے 10400 ایک سی ایم ہے آپ کی، دوسری اور بھی کوئی ہے؟ نمبر تو نہیں غلط نوٹ ہے آپ کے پاس؟ میری ہے جی CMA 10287. وہ صبح والی کون سی ہے وہ بھی نہیں ان سی پی نمبر جی CP 15 آپ تو ایک ہی سی ایم ہے 1525. آپ یہ ایک پریئر ہے آپ کی کہ آپ وہ فل کوڈ بنائیں جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے کی تھی، یہ پریئر آپ کی. میری پریئر یہ ہے سر، اس میں یہ جو لکھی ہوئی- this case must be heard by the Supreme Court as described in Article 176 to be read with Article 191A, because Article 191A does not exclude, and I will submit how. So I believe that Article 166 is the main article and 191A cannot be read in isolation. Kindly read your prayer clause, page 4 پہ جو ابھی اپلیکیشن ہمیں دی ہے. دو آپ کہہ رہے ہیں CMAs ہیں، ہمارے پاس ایک ہی ہے 10400. یہ ہمارے پاس ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں 10287 یہ نہیں ہے ہمارے پاس. کاپی دکھا دیں. میرے پہ تو یہی نمبر لگا ہوا ہے جو مجھے نمبر آفس کے لگا کے دیا. We don't have that. ہمارے پاس تو یہ چھوٹی فائل. آپ نے رضوی صاحب دو سی ایم اے فائل کی ہیں. سر ایک تو بعد میں فائل کی ہے کہ اس پوائنٹ پہ کہ whether it should be heard by this bench or by the full court. لیکن پہلے میں نے جو ڈاکومنٹ لگائے ہیں 1087. وہ یہ جو کہہ رہی ہے اس کی پریئر کیا ہے؟ وہ فار سبمیشن آف ڈاکومنٹ ہے وہ سی ایم اے، فرسٹ سی ایم اے جو ہے وہ فار ڈاکومنٹس ہے یا کیا پریئر ہے اس میں؟ نہیں یہ تو یہ ہے جی فائل میں تلاش کر لیں، یہ 10287 ہے اس میں ہمارے پاس. ہاں تو اس کا نمبر میں بتا رہا ہوں نا 1087. یہ اس میں دیکھیں یہ جو رکھی ہوئی ہے نا فائل ایڈیشنل ڈاکومنٹس سر اس میں نے لگائے ہیں میرے پاس ہے. نیشنل اسمبلی یا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ڈاکومنٹ مینلی. تو کدھر ہے نا آپ نکالیں، وہ کہہ رہے ہیں رضوی صاحب ابھی سٹارٹ لینے سے پہلے کیونکہ آپ نے تو دونوں سائڈیں دیکھی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم بہتر کنوے ہو سکیں گے، ایک دوسرے کو کنوے کر سکیں گے اپنی بات. وہ پریئر ٹھیک ہے. سر شاید مائک کھولے نا، میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات. ہاں کہ ایک تو ہے پریئر، دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤ دس پریئر کین بی میٹیریلائزڈ. اب یہ بینچ، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ بینچ کیسے آرڈر پاس کر سکتا ہے، سر یہ وہ راستہ ایکچولی چاہیے. اس طرف سے بھی یہ سوال آیا تھا. اٹس اے ویری سمپل سر. لائک فیڈرل شریعت appellant bench was also constituted under an amendment. ٹھیک ہے. Still it remained part of the Supreme Court. So sir, despite Article 191A through 26th Amendment, you are still a Supreme Court. Your judgment will be the Supreme Court. So like any bench who can refer any important matter, recommend for the full court. آگے یہاں پر دو رائے ہیں. اب جی کچھ لائرز کا خیال ہے کہ یو مسٹ پاس این آرڈر فار کانسٹیٹیوشن آف دی فل کورٹ. کچھ کا خیال ہے کہ اس میں بھی پھر ڈائیورجنس ہے کہ 16 ممبر یا 24. سر وہ جو آرڈر کی بات ہو رہی ہے وہ 97 98 جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہے، میں اس کو پسند نہیں کر رہا. دیٹ واز ویری انپلیزنٹ ہیپننگس. لائک اینی ادر bench of the Supreme Court, this bench can also refer the matter to the competent authority to constitute bench. یہ ایک چیز علیحدہ ہے، اس پہ بھی ہماری ریزرویشنز ہیں کہ
we cannot think that it will be constitutional that this constitutional bench may refer the matter to the Chief Justice or the committee for constitution of a full bench. That may be for conferment of jurisdiction to hear the matter under challenge the 26th Amendment. Sir, whether it is the Honorable Chief Justice, whether it is the Honorable Committee, whatever is the prevailing under rules and procedure law is, that will be followed. इसको इस तरह इसके लिए इसको इस तरह कहा, समझ why then you don't apply to the Chief Justice? So, sir, this question arose before the Federal Shariat Court Appellate Bench of the Supreme Court. It is a PLD. नहीं, आप कहते हैं किसको फॉरवर्ड करें? I read that किसको रेफर करें? किसको फॉरवर्ड करें केस, आप Chief बताइए. Justice साहब को. under the rules, I think now it is the committee which decides the formation of the bench. कौन से लॉ के तहत आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जी, उसके तहत ये कमेटी, ये कोर्ट किसको रेफर करे? कमेटी को रेफर करें. sir, if let's presume there is a conflict between 191 and 191A, there are many judgments, including Sindh High Court versus Federation of Pakistan, that in such situation which will prevail. And for example, in that case, it was a reference to Al Jahaz Trust case, but there was a conflict between Article 209 and 203C. So the original provision of the Constitution, and secondly, which was in favor of the general public in the administration of justice, it was held that will prevail. And Article 209, we know, prevailed. And that principle was then carried out in the Sindh High Court versus Federation of Pakistan. एक सवाल इसमें आ जाए. आपकी बात सपोज हम मान लेते हैं, हम कमेटी को भी दबा देते हैं. ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देती है, तो फिर आर्टिकल 191A3 में जो बात की गई है कि, और Sir, article 191A5 में भी की है, नो अदर कोर्ट. मुझे इजाजत दें, मैं इसी पे उसमें मैं क्या बात करेंगे? करना उसको चाहता आप हूँ. बताओ. आप मुझे इजाजत दें, लेकिन सर मैं इससे पहले मैं बात करूं, मुझे इजाजत दीजिएगा कि ये जो बुक अगर आपको मिल गई है, इसका सर पेज 58 देख. माइक करीब ले, माइक 58 पेज देखिए सर, 58, और then I will refer to 59. Now, while this is a debate of the Constituent Assembly, dated Sunday, 31st December 1972. ये तो आप मेरिट्स पे जा रहे हैं. जी, आप मेरिट्स पे जा रहे हैं, हम मेरिट्स पे नहीं, हम मैं मेरिट पे नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं मेरिट पे जा रहा. सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि this constitution was made after December 71, when a catastrophic events took place, and the founding fathers of this constitution, they remembered what had happened, and particularly the representative from small provinces like Balochistan, they were to be taken along. And that is why, sir, before the matter was placed, draft was placed before the House, an accord took place between all the political parties, particularly with the smaller provinces parties, and an accord took place. So, sir, if you see page 59, para 2 on page 59, I will just refer 2-3 lines, sir, just to highlight, sir, the Constitution, this Constitution should not be taken lightly, particularly amendments against those provisions of the Constitution who were made by the founding fathers after December 71. Now, my lords, para 2 says, sir, the accord was signed and it was acclaimed by all the parties
represented in the National Assembly, including the acting president of the National Awami Party. I must say, sir, that this proves to be a milestone as far as the proceedings of the committee were concerned, because let me concede frankly that until the 21st of October, when the committee met, we had not been able to do any work by the interim constitution. There was nothing whatsoever between the. So, my lord, then comes the next para 3. Sir, with these submissions in the beginning, now I would like to take you through the salient features of the draft constitution. So, my lord, this constitution came into existence after a lot of pains and a lot of homework was done. So, I would say, sir, this court must take pains and must see the critically, very critically, if there is any amendment and the salient features are framed. Now, this is the question of the independence of the Supreme Court of Pakistan. Therefore, my lord, whatever we are submitting for the protection of this آپ کیا institution. کہنا چاہتے ہیں کہ کون سی بینچ سنے، فل کورٹ ہو تو کون ہوگا اور فل کورٹ کون بنائے گا؟ یہ 3 سوال ہے سمپل. نو ڈاؤٹ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب کون سنے گا یہ آپ سے پوچھتا ہوں. میں سر ابھی میں لیٹس گو ٹو دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف سر. Article 191, sir. 191A. I must pass a remark before I read Article 191. We all know that there was an effort to make a constitutional court. There are many countries where we have the constitutional courts, but somehow, in view of the political issues or political expedients, that could not be done, and the government decided to form one constitutional bench. I have nothing against the constitutional bench or even the constitutional court, but now, sir, this bench is being tried to work like a court. Oh, sir, I have a book, recent book, where at least 6-7 countries in the Europe I have read, they have made the constitutional courts. So, sir, when I was going through all these constitutional, I can gift the book to this honorable bench. I was feeling as it was under Article 191A I was reading. Because, sir, the court is a different thing than the bench. Bench comes from the court, court doesn't come from the bench. And rules are made by the court, not by the benches. Now we have the Federal Shariat Court, which has made the rules under 203H, but we have the Federal Appellant Bench. Appellant Bench doesn't make the rules because Appellant Bench is a part of the main court. Now, sir, 191A, sir. There shall be a constitutional bench of the Supreme Court, comprising such judges of the Supreme Court and for such as may be nominated by the Judicial Commission of Pakistan. So, sir, you are judges of the Supreme Court. That is your first position. And in view of that position, you have been nominated members of this bench. Now, sir, come to class 3. The bench of the Supreme Court, other than a constitutional bench, shall exercise following bench jurisdiction no se shuru ho vested in raha the Supreme Court, رضوی صاحب namely, نو سے شروع ہو، نو بینچ. sorry, no bench, yes, sir. No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise. Then, sir, A, B, C میں وہ jurisdiction دی گئی ہے.
No, sir, come straight to class 6. Class 6 says, notwithstanding anything contained in the Constitution, but subject to law, the judges nominated under class 1 may make rules regulating the practice and the procedure. No, sir, notwithstanding has been used here. It means this bench has been given power to make rules to regulate the practice, but notwithstanding has not been used in class 3. बेंच को पावर नहीं दी गए, बेंच के पास पावर नहीं रूल बनाने के, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास उन जजेस के जो पैनल दिया गया है, जितने भी जजेस हैं इस वक्त 15 हैं, वो बैठकर रूल बनाएंगे, एक बेंच नहीं बनाएगा. ठीक है, वो जजेस जिनको नॉमिनेट ये लॉ तो ये चाहे 8 का बेंच हो चाहे 15 का, जो जजेस हैं ऑफ द अंडर आर्टिकल 1, 9, 10 जितने भी जजेस हैं, their jurisdiction does not start with the notwithstanding. It means the draftsman never intended to exclude other jurisdiction of the Supreme Court. So 191A has to be read with 176A. 6 No, का sir. तो ताल्लुक नहीं है ना जनाब. 6 का ताल्लुक तो सिर्फ रूल मेकिंग पावर्स की हद तक है, तो इसमें कैसे वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से आप क्या निकाल रहे हैं इसमें? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? Purpose of this is that The judges nominated under clause 1 may make rules the regulating bench- the practice and procedure of the constitutional benches. This is also only the rule making power conferred to the judges of the constitutional bench. Sir, it means that the Constitution bench, How the other jurisdiction is overlapping or overriding. because notwithstanding doesn't start, class 3 doesn't start with the notwithstanding. And then another contention is, kindly see Article 175A. Why you need non-obstant in sub-article 3? Yes, sir. तो बड़ा clear है ना, उसमें non-obstant क्यों आप- लगाएंगे वहाँ पे वो? आप 175A की क्लास 3 देखें सर. जी. क्लास 1 और 2 में जुडिशल कमीशन बना है और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट का जिक्र है क्लास 2 में. नो क्लास 3 सेज notwithstanding anything contained in class 1 or class 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. Now, sir, class 2 इससे क्या has been excluded by using notwithstanding in class 3. What is the relevancy? रेलिवेंस ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 के तहत या 186 के तहत जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करनी होती तो क्लास 3 भी नॉटविथस्टैंडिंग के साथ शुरू होता, जिस तरह क्लास 3 175A की शुरू हो रही. तुमको फिर फिर इसमें- इसमें ना अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सब आर्टिकल 3 में तो क्लियर कह दिया ना, व्हाई यू नीड नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने वहां ला के रोक दिया ना उसको. इसके ये सर ये काफी नहीं है, उसको मैं अभी बताऊंगा क्यों नो बेंच कहा है, वो भी मैं आपसे करूं. Bench of the आप Supreme पहले Court. सर देखिए जस्ट ना, नोट माय ये पॉइंट, माय non-obstant- सबमिशन दैट notwithstanding Please, has please, not जरा not बात been सुन लीजिए used. एक मिनट प्लीज. लिसन, व्हाई यू आर इन हरी? मैं अब सर नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. अब अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि नॉट स्टैंडिंग ये लिखा है तो इसलिए सारा गलत हो जी. गया. ये तो उसमें कोई मैं जरूरत ही नहीं अभी है ना इसकी अर्ज करता हूँ. लिखने की. ये जो नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको पढ़े सर विद क्लास 5. ऑल पिटिशंस, अपील और रिव्यू application against judgment rendered or passed to which clause 3 applies, pending or filed in the Supreme Court prior to commencement of the Constitution, forthwith stand transferred to the constitutional bench. और स्टैंडन कर दिया उसको कि सारी जितनी भी होंगी वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जी. जाएगी. आगे भी Constitutional आगे भी इसलिए नॉटविथस्टैंडिंग यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ.
देखिए This is the आप reason आपके जो बाकी कुलीग हैं کہ सुनिए क्लास 5 की हद तक रिजवी साहब सुनिए आपके बाकी कुलीग्स का व्यू पॉइंट ये है जो मैं अब तक समझा हूँ वो कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फुल कोर्ट वो तो उन्होंने ये आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश की कि कोर्ट अलग है फुल कोर्ट जी और बेंच जो है वो अलग है यहाँ पे चूंकि बेंच का जिक्र है बेंच को मना किया गया है किसी भी दूसरे बेंच को कहना है कि मकसद उनका ये कि फुल कोर्ट को मना नहीं किया गया इसलिए इसको फुल कोर्ट में भिजवाया जाए अब अगर दो बातें इसमें आती हैं अगर वो फुल कोर्ट है तो कौन सी फुल कोर्ट आया मौजूदा फुल कोर्ट सर मैं तो या वो यहाँ जो तक 26 अर्ज वाला। करूंगा सुप्रीम कोर्ट को आप अबॉलिश या खत्म या उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकते एज लॉन्ग एज वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आप जितने भी अमेंडमेंट ठीक है रिजवी तो साहब आप अपनी प्रेयर क्लास इसमें बहुत सी जजमेंट्स हैं जो पहले कही गई हैं मैं रिपीट नहीं करना चाहता इससे पहले कि जनाब उठे आर्टिकल 184 जरा देखें आप अपनी प्रेयर क्लास तो पढ़ लें कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे प्रेयर क्लास पढ़ लें 184 सर देखें आप प्रेयर क्लास अपनी पढ़ लें कि आप हमसे क्या चाह रहे हैं मैं चाह रहा हूँ सर प्रेयर क्लास पढ़ने तो बेहतर प्रेयर मेरी ये है कि आप अगर पढ़ लें सर please। मैं जबानी जो अर्ज कर रहा हूँ चले ठीक ठीक मेरी प्रेयर ये है कि दिस मैटर शुड बी प्लेस्ड before the Supreme Court of Pakistan as described under Article 176. नहीं, ऐसा Article नहीं। 176 मैं is alive. मैं आपसे पढ़वाना इसलिए It चाह रहा has, it has not. हूं। जो आपने लिखा है प्लीज वो पढ़ लें सर मैं अपनी चीज को इम्प्रूव भी तो कर सकता हूँ आप पहले आप पढ़ उस पे क्यों जा रहे हैं जब मैं यहाँ कह रहा हूँ छोटी सी आपकी मेरे पे ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल आप पढ़े ना। बेंच है मैं अपनी मर्ज आप पहले पढ़ लें उसके बाद इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं जो भी हो आपकी मर्जी है। खत्म ही नहीं कर रहे वो। आप मेरे लिखे हुए ना इतना जाएं it is therefore most respectfully prayed that instant application may be allowed and in consequence whereof the title petition may very graciously be placed before a full court bench ठीक है। full court bench आगे चले भी- चले सर यहीं पर रुक जाएं of this august court comprising judges who were serving immediately before to the enforcement of 26th amendment for adjudication and announcement of आपकी भी यही प्ली है कि उन 16 जजेस के पास लगे नहीं सर मेरी प्ले ये है फुल सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 176 यानी आप अपनी प्रेयर अमेंड करना चाहते हैं चले मेरी इसको यही समझ लें सर ठीक है ये आप प्री 26th अमेंडमेंट है या एज ऑफ टुडे है दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग क्लियर्ड देखें सुप्रीम कोर्ट एज इट एग्जिस्टेड प्रायर टू द अमेंडमेंट और एज इट एग्जिस्ट टुडे सर मेरे ऊपर इसमें मैं बहुत सा केस ला भी आप cite इसका कर सकता बता हूं। देना so that Once an amendment is a challenge, after amendment that becomes part of the constitution. But once it is a challenge, it becomes sub judice. Its validity becomes subject to the outcome of the proceedings. There are many amendments ये which 24 were जज सुने आपके ख्याल में सवाल ये है आप कि कौन पूरे से 24 जज सुने जो नहीं है 16 सुनिए जी। ये बता पूरे 24 जज सुने जी Pre- मुझे कोई इतराज नहीं अगर कोई सब्जेक्ट टू को वॉलंटरी रेक्यूजल है या कोई और इशू है बट मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं क्योंकि आई स्टिल बिलीव अकरम शेख साहब का भी है दिस कि 24 बेंच जज सुने or this bench or the all 15 judges bench is a part of the Supreme Court and this matter relates सब to the फर्दर आप Supreme Court फर्दर इसमें टाइम लेना चाहेंगे तो सुबह